So in our paper, MAT 303, unit number 4, just wait a minute. Hello, student. So, just introduction portion and basic examples to find out our Fourier series for the given periodic function. Now, second part of our Fourier series, that is when that limit is from minus a to a or minus pi to pi, then how the integration is easy for us and how that evaluation be done. So let's just recall that formula of our Fourier series in the given periodic function f of x in interval c to c plus 2l. So that is formula f of x is a0 by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinitive an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l, where a0, an, bn are Fourier coefficient and its value, that is 1 upon L integration from c to c plus 2L f of x dx. While in an, function f of x multiplied by cos. So to evaluate our an, that is integration c to c plus 2L f of x cos n pi x by L dx, and whole integral value multiplied by 1 upon L. In Bn also, that is 1 upon L integration that limit c to c plus 2L f of x sin n pi x upon L dx. So we consider only a single function, single formula to evaluate Fourier series for the given function f of x. एक ही formula से सभी के सभी function के ऊपर हम निकाल सकते हैं. Some basic results which is also discussed, that is sin 0 0, sin pi also 0, sin 2 pi, sin n pi, sin 2n pi, all value multiplied by integer with pi, sin function goes to be 0. While in cos function, cos 0 is 1, cos pi is minus 1, cos 2 pi is 1, cos n pi, that is equal to minus 1 raised to n, cos n pi, and cos even number of n pi, so cos 2n pi, that is 1. So we apply that cos 0, cos n pi, cos 2n pi value in our examples. Now let's recall that for definition of odd function and even function. So for odd function, function f is said to be odd function
if f of minus x is equal to minus f of x. That means if you replaced minus x in place of x, अगर आप x की जगह पर minus x replace करते हैं and we get similar function value with multiply by minus symbol, then it is said to be an odd function. While in even function, f of minus x, which is similar as f of x. In even function, if we put x is equal to minus x and it is similar, then it is f of x. So what is the example of odd function? Odd function के example क्या क्या होंगे अब बताओ. Sin x, x cube. Very good. Sin x, x cube, फिर x raised to 5, x raised to 7, वो सारे के सारे जो है वो आपके ऑड फंक्शन होंगे. एंड इवन फंक्शन में x स्क्वायर, x raised to 4, mod x, cos functions, so they are examples of our even function. So x, x cube, sin x, tan x, all are odd functions. X square, x raised to 4, cos x and mod x, they are all as even functions. Now you can identify that by graph which function is odd and which one is even function. In even function, if it is symmetric about y-axis, a function is symmetric about y-axis, so that function is called as a even function. While for odd function, if our function is symmetric about origin, symmetric about origin means its behavior is similar in first quadrant and third quadrant, opposite quadrant, and also similar in second quadrant and fourth quadrant for odd function. So odd function is symmetric about opposite quadrant, that is called as a origin, symmetric about origin, while even functions are symmetric about y-axis. Now let's some product of odd and even functions. So let first product of odd function multiply by odd function. What is your answer? Odd function multiply by odd function. So even. Very good. यहाँ पर हमें नंबर नहीं देखना है कि ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप बोलोगे कि 15 होगा, 15 भी ऑड है. हम यहाँ पर डिस्कस करना है फंक्शंस के बारे में. सो ऑड फंक्शन कोई भी ले लो, दैट x इज योर ऑड फंक्शन. सिमिलर अदर इज आल्सो ऑड फंक्शन, लेट इट इज x क्यूब और x itself. नाउ इट्स प्रोडक्ट. So odd function into odd function here always became even function. So in a functions rule, odd function multiply by odd function, that is even. Next is odd function multiply by even function. Odd function multiply by even function क्या होगा? Odd, very good, because x multiply by x square, x को x square के साथ मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब होगा, तो वो तो इवन ही बन जाएगा. Odd function multiply by even function, that is again odd function. And if you multiply by two even function multiply by even function, that is always So even. always even. आप सोच सकते हो कि x square multiply by x raised to 4, तो x raised to 6, तो even multiply by even, तो वो even बन जाएगा. Now here written some product rule of x into sin x. Now x into sin x odd function होगा कि even function होगा? X into sin x
So even इवन फंक्शन होगा बिकॉज x भी हमारा ऑड फंक्शन है, साइन फंक्शन जो है वो भी एक ऑड फंक्शन है, और उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं ऑड इंटू ऑड, तो वो इवन ही होगा। और आप सिंपली चेक कर सकते हो, x की जगह पर -x पुट करो, x की जगह पर -x, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो x इंटू कॉस एक्स कितना होगा? x इंटू कॉस एक्स, x इज ऑड, कॉस इज इवन, वो ऑड फंक्शन बन जाएगा ऑलवेज। नाउ x स्क्वायर इंटू कॉस, x square is even, cos is also even, so that product is also even, while mod x into sin x, mod x into sin x is odd, mod x is even, so it is a even into odd, therefore it is a odd function. So product jab hoga, now sin x is your odd function, so sin minus x आपको पता है कितना होगा? माइनस साइन, माइनस आउटसाइड हो जाएगा, सो इट इज योर माइनस साइन एक्स बिकॉज इट इज योर ऑड फंक्शन, वाइल कॉस फंक्शन जो होगा कॉस माइनस एक्स, कॉस इज अवर इवन फंक्शन, तो जब इवन के अंदर माइनस होगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डायरेक्टली, सो कॉस माइनस एक्स इज सिमिलर एज कॉस एक्स, कॉस माइनस ने खाई जाए वो याद रखो, कॉस के अंदर माइनस सिंबल हो तो वो रिमूव हो जाएगा बिकॉज कॉस इज इवन फंक्शन, सो कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, while sin of minus x is similar as minus sin x. Now integration rule जो हमें इंटीग्रेशन फोरियर सीरीज करेंगे an और bn फाइंड करने में, a0 an bn, so that recall general integration rule of two functions u and v, which is similar as u into v1 minus u dash v2 plus, सर tan फंक्शन भी माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा ना? साइन का माइनस जो होगा ना वो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा tan फंक्शन में सर, tan साइन ऑड फंक्शन है ना इसीलिए माइनस बाहर आता है, कॉस जो है वो इवन फंक्शन है इसीलिए कॉस जो है वो माइनस को निकल जाता है। tan ऑड फंक्शन है, tan ऑड है, tan इज ऑड फंक्शन, साइन अपॉन कॉस, फिर x की जगह माइनस एक्स पुट करके चेक करो, सो tan माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स अपॉन कॉस माइनस एक्स, नीचे वाला कॉस माइनस एक्स जो है वो प्लस कॉस एक्स हो गया, बट ऊपर वाला जो साइन माइनस एक्स है उसमें से माइनस बाहर आ गया, दैट इज योर माइनस tan x, सो tan माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan x, सो tan x इज योर ऑड फंक्शन, tan x is your odd function. So that is our general integration rule of two functions u and v. So u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 and so on, where v1, v2, v3 are consecutive integration of v and u dash, u double dash are derivative. Now we have one formula. So if your integration having a limit from minus a to a, from minus a to a for a function f of x, so if your function is odd function, then integration value is 0. So odd function का integration minus a to a के अंदर 0 होता है। Similarly, if your function is even function, f of x is even function, and its integration from minus a to a, that will become 2 times 0 to a f of x dx. 2 times 0 to a f of x dx. वो माइनस a to a है, उसकी जगह वो 2 times 0 to a हो जाएगा अगर आपका इवन फंक्शन है तो।
और अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है तो पूरा इंटीग्रेशन 0 होगा. This integration is apply for odd and even rule. But some function are there which is neither odd nor even, like e raised to x, log x, x plus x square. तो वो जो फंक्शंस है वो ऑड फंक्शन भी नहीं है और इवन फंक्शंस भी नहीं है. तो जब हम उसमें इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ए टू ए में, तो ये जो फॉर्मूला लिखी है ऑड इवन के लिए उसमें से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगी. आपको उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है एंड देन पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. वन मोर थिंग इज दैट दिस फॉर्मूला where function is odd, answer is 0, function is even, answer is 2 times 0 to a f of x dx. That is always apply from limit minus a to a. If your limit is starting from something like 0 to a or 0 to 2a और 1 to 4 या कोई भी नंबर से शुरू होता है, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2a या 0 to a या 1 to 4 या कोई भी और भी नंबर है माइनस a to a यानी कि माइनस 1 to 1 माइनस 5 to 5 ऐसा कोई नंबर नहीं है, then you cannot apply this odd rule or even rule in an integration. इसीलिए जो हमने आगे पहले वाले जो एग्जांपल किए थे लास्ट 2 लेक्चर्स में, उन सभी में इंटीग्रेशन की जो लिमिट थी वो 0 से शुरू होती है. इंटीग्रेशन की जो लिमिट थी वो 0 से शुरू होती है. तो वहां पर हमें ऑड इवन चेक करना ही नहीं है, सीधा आंसर इवैल्यूएट कर देना है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना है. बट अगर आपके पास माइनस पाई टू पाई, माइनस 1 to 1, माइनस 2 to 2 है, तब आप ऑड और इवन चेक कर सकते हैं. क्यों करेंगे हम? कि अगर आपका फंक्शन ऑड हो गया तो फिर इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 आप लिख सकते हो, और अगर इवन हो गया तो वो 2 times 0 to a लिख सकते हो. बट अगर आप भूल गए हो तो भी आंसर तो वही सेम ही मिलने वाला है, अगर ऑड इवन चेक नहीं किया तो भी. Okay, so now let next, that is cos n pi. Cos n pi is minus 1 raised to n. Cos 0 is 1. Cos 2n pi is also 1, while cos n pi is minus 1 raised to n. So what is the answer of cos minus n pi? What is the answer of cos minus n pi? One. आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें यह आप सिलेक्ट करो. One. One. Sir, D. Very good. ये रहेगा -1 raised to n. 1 तो होगा नहीं, बिकॉज cos माइनस एन पाई है. मैंने अभी बताया कि cos के अंदर कोई भी माइनस सिंबल है तो वो रिमूव हो जाएगा. cos माइनस ने खाई जाए, cos माइनस एक्स और cos माइनस एन पाई is similar as cos n pi. Cos minus n pi is similar as cos n pi, and cos n pi is minus 1 raised to n. Therefore, cos minus n pi is also similar to minus 1 raised to n. Answer D is correct. Cos minus n pi is similar as minus 1 raised to power n only. वो माइनस बाहर नहीं आता, cos के अंदर का जो माइनस है वो बाहर नहीं आता. साइन फंक्शन होता है तो बाहर आता है, बट
माइनस कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन तो बाहर नहीं आता, मतलब कि वो माइनस से कुछ लेना देना ही नहीं है. If there is a cos minus n pi, which is also same as cos n pi, both have the same value. Cos pi, cos minus n pi, both have the same value -1. Cos 2 pi, cos minus 2 pi is also similar as 1. Cos 3 pi, cos minus 3 pi, and so on. So it is depend upon n. So we write it is -1 raised to n. So cos minus n pi is similar as -1 raised to n, that is your cos n pi. Both are equal. Sin function, sin minus n pi, तो उसमें माइनस बाहर आ जाता है, तो वो माइनस साइन एन पाई होगा. बट साइन एन पाई तो 0 है, तो -0, दैट मीन्स 0. तो साइन एन पाई इज 0. इवन साइन माइनस एन पाई करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 ही होने वाली है. तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे उसमें साइन फंक्शन आएगा तो वो वैल्यू 0 की ओर चली जाएगी. कॉस वैल्यू होगी वहां पर हमें मिलेगा. Okay, so now we are going to start our examples. So let's obtain the Fourier series of f of x is equal to x in limit -pi to pi. जब आपकी लिमिट -pi to pi इस फॉर्म में है तो ही वो ऑड और इवन फंक्शन के बारे में सोचना है. अगर वो 0 से 2 पाई में है, 0 से 1, 0 से 2 के अंदर है, ऑड इवन देखना ही नहीं है. जैसे हमने आगे करते थे वैसे ही यूजुअल मेथड से सॉल्व करना है. Now in this limit from -pi to pi, let's find out value of L and then A0, An, Bn in your Fourier series coefficient. So let's compare the lower limit of our interval. So C is -pi. And upper limit is C plus 2L. So C plus 2L is also pi here. Now put C is equal to -pi. C is equal to -pi. So -pi plus 2L is equal to pi. Now लेफ्ट हैंड साइड में जो -pi है उसको राइट हैंड साइड में ले आओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. So 2L is equal to pi plus pi. So 2L is 2 pi and L 2 get cancelled. So we get L is equal to pi. So whenever we have limit from -pi to pi, you can identify the value L. That is L is pi. अगर डायरेक्ट भी लिख सकते हो या कैसे फाइंड करना है तो ये उसकी फॉर्मूला है. लोअर लिमिट C होगी और अपर लिमिट जो है वो C plus 2L होगा. C की वैल्यू रिप्लेस करो एंड देन सिंप्लीफाई करो. Now here -pi to pi limit is given and f of x is x. So you can say that f of x is an odd function. In our interval -pi to pi. So when we are evaluating our Fourier coefficient A0, that is 1 upon L integration C to C plus 2L f of x dx, put L is equal to pi. That is 1 upon pi integration from -pi to pi x into dx. Now x is an odd function. So odd function का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे -pi to pi के तो वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो दैट वैल्यू ऑफ A0 इज 0. अगर आप उसको इवोल्यूएट करोगे तो x का इंटीग्रेशन x²/2 फिर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट -pi पुट करके सिंप्लीफाई करो तो भी आपका आंसर जो है वो 0 ही मिलेगा. जब भी ऑड फंक्शन हो -pi to pi है तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर उसको मिल जाता है अगर ऑड फंक्शन है तो. और अगर इवन फंक्शन है तो वो 2 times 0 to pi हो जाएगा. Now to find out our AL, that is 1 upon L integration C to C plus 2L f of x cos n pi x by L dx, that is your formula of AN. Now replace all this value of L and limit
So 1 upon pi, integration from minus pi to pi, x cos n pi x upon pi dx. Now this pi get cancelled. That is x into cos nx. Now x is an odd function and cos nx is your even function. So what is that product odd into even? Odd into even function is odd. So here it is again integration of odd functions in the limit minus pi to pi. तो जब माइनस पाई टू पाई के अंदर हम ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो जीरो हो जाएगा. तो विदाउट इंटीग्रेटिंग UV rule, you can directly say that value of an is 0 because it is your odd function. Now for Bn, 1 upon pi, integration from minus pi to pi, x into sin nx dx होगा. f of x ले लो, l is equal to pi ले लो और सिंप्लीफाई करो. So x into sin nx होगा. Now x into sin nx उसका प्रोडक्ट ऑड होगा कि इवन होगा? Even. Very good. Because x is odd function, sin n is also odd function. So that is a product of odd function, odd into odd, that is even, and hence that integration is written as a 2 times 0 to pi x sin nx dx. तो माइनस पाई टू पाई था बट इवन फंक्शन हो गया, इसीलिए हमने उसको लिख दिया 2 टाइम्स 0 to pi x into sin nx. And now let apply UV rule. फिर integration is similar. So 2 upon pi as it is UV rule. So x as it is integration of sin, that is minus cos nx by n, then minus u dash v2, derivative of x is 1, and integration of minus cos nx by n, that is minus sin nx by n square. Limit is 0 to pi, so sin function goes to be 0. So put upper limit pi, so pi into minus cos n pi upon n, and for lower limit 0, so 0 into minus cos 0 upon n, so वो 0 ही होगा. So 2 upon pi into minus cos n pi. तो ये पाई तो चलो मल्टीप्लाई में है तो कट हो गया. अब ये बाहर वाला जो माइनस है वो अंदर वाला जो माइनस है उसको बाहर ले लो, वो बन जाएगा -2 cos n pi. Cos n pi is -1/n upon n. So your answer is -2 -1/n upon n. ये बाहर वाला जो माइनस है और वो जो -1/n होता है, तो ये माइनस माइनस कट नहीं होगा. You cannot cancel that value. So keep as it is -2 -1/n upon n. That is the answer of Bn. So it is odd function. A0 is 0, An is 0. So let we get only Bn. A0 is 0, An is also 0, and Bn is -2 -1/n upon n. Sin n pi x upon l. L is pi cut. So final answer, that is -2 into sigma n is equal to 1 to infinity -1/n upon n into sin nx. That is your Fourier series of function x. Function x in your limit minus pi to pi. लिमिट बदल जाएगी तो आंसर बदल जाएगा. फंक्शन नो डाउट वो सेम रहेगा, बट अगर आप लिमिट बदल दोगे पीरियोडिक फंक्शन की लिमिट,
तो आंसर भी चेंज हो जाएगा. So x is equal to -2 sigma n is equal to infinitive -1 raised to n upon n sin nx. Okay, so let's go through our next example, that is find out Fourier series. So let's find out Fourier series of our function f of x is equal to x square in limit -1 to 1, and then deduce the following result. So that result, that is sum of our infinite series, that's 1 over 1 square minus 1 over 2 square plus 1 over 3 square minus 1 over 4 square and so on. That is similar as pi square upon 12. Next is all terms are positive. One upon 1 square plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 4 square and so on. So that summation value, that infinite sum, that value is similar as pi square upon 6. और उसके ऊपर जो है वो अल्टरनेटिव सीरीज है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, and that is your -1 raised to n upon n square alternative series, which is convergent here, and its value are pi square upon 12. That is your -1 raised to n upon n square. -1 raised to n plus 1 upon n square. So that is alternative series. So that summation is pi square by 12, and simple positive series, that is summation 1 upon n square, that is pi square by 6. And third one, that is 1 over 1 square plus 1 over 3 square plus 1 over 5 square and so on. Denominator are even number. So that is 1 over 2n minus 1 whole square. For n is 1 to infinity. 1 over 1 square, 1 over 3 square, 1 over 5 square and so on. उन सबका अगर हम summation करते हैं तो वो pi square by 8 होगा. So now that example says that first find out Fourier series of your function f of x is equal to x square in the given limit -1 to 1. Once you get your Fourier series, then deduce the following result from it. Deduce the following from it. मतलब कि ये फोरियर सीरीज मिलने के बाद ये पूरा रिजल्ट जो है वो आपको निकालना है फोरियर सीरीज का यूज करके. दैट इज योर कन्वर्जेंट सीरीज. ऑल सीरीज आर convergent series because its summation are finite. So first part to find out your Fourier series. So limit is -1 to 1, original limit is c to c plus 2l. So let's find out l. Lower limit c is -1, upper limit c plus 2l is 1. Put c is equal to -1. So 2l is 1 plus 1, that is 2. 2 cut, so l is 1. Now for finding a0, that is 1 upon l, so 1 upon 1 integration limit -1 to 1 f of x is x square into dx. So integration is -1 to 1 of x square. So integration limit is -1 to 1. So we can check that is your function is even or not. If it is an odd function, then direct is 0, and if it is an odd function, even function, then it is 2 times 0 to 1. तो x square कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है. अगर वो इवन फंक्शन है तो वो 2 times 0 to 1 बन जाएगा. 2 times 0 to 1 into x square.
अब उसका इंटीग्रेशन करो, x square का इंटीग्रेशन x3/3 0 to 1, so 2/3 is your final answer. So a0 is 2/3. How to find out our an? An is integration f of x into cos. So that is here 1/1 integration from -1 to 1 x square into cos n pi x upon 1. So that is only x square into cos n pi x. X square into cos n pi x. So let's apply our UV rule. But before UV rule, let's check that it is an odd function or even function. X square is even, cos is also even. So that is a product of your even function. So even into even, that is again even function. And hence, we can write that integration is 2 times 0 to 1. वो -1 to 1 है, उसकी जगह 2 times 0 to 1 बन गया, फिर x square cos n pi x dx बनेगा. अब उसका UV रूल अप्लाई करके इंटीग्रेशन निकाल दो, तो x square as it is cos n pi x का इंटीग्रेशन sin n pi x upon n pi माइनस u डैश, तो x square का डेरिवेटिव 2x v2 sin का इंटीग्रेशन माइनस cos n pi x upon n square pi square, minus minus plus derivative of 2x is 2, and then again integration of minus cos n pi x, that is minus sin n pi x upon n cube pi cube. Sin function get cancelled first and last, so we get minus 2x into minus cos n pi x, that is minus minus plus 2x into cos n pi x upon n square pi square, put upper limit 1 and lower limit 0. So 2 into 2 cos n pi upon n square pi square minus 0, because for lower limit 0 जब हम 2x में पुट करेंगे तो 2 into x तो वो 0 हो जाएगा, and cos n pi उसकी वैल्यू -1/n. So 2 to the 4. So final answer of an, that is 4 into -1/n upon n square pi square. Now for evaluation of Bn. So f of x is x square sin n pi x upon 1. So x square into sin n pi x dx from limit -1 to 1. Now that answer here it is written 0 directly. Why? Why answer 0? Sir, odd function. Odd function है, because x square तो चलो even है, but sin जो है वो odd function है, तो even into odd बन जाएगा. Even function multiply by odd function, that is similar as odd function. जब भी odd function में इंटीग्रेशन करना है उसका आंसर 0 हो गया. So we can apply our Fourier series, that is a0/2 plus sigma en cos plus bn sin. bn 0 हो गया, a0 की वैल्यू 2/3 है, so that is 1/3, 2 get cancelled, 1/3 plus 4 upon pi square outside, sigma n is equal to 1 to infinity -1/n upon n square into cos n pi x. So that is our Fourier series of the given function f of x. Now our aim is to find out that result which is obtained from the given result of Fourier series. So let's write down again Fourier series. So we get f of x is equal to x square, and x square here according to Fourier series your answer is 1/3
plus 4 upon pi square into sigma n is equal to 1 to infinity minus 1 raised to n upon n square into cos n pi x. Now replace the value of x first and then verify. तो x की वैल्यू यहाँ पर -1 to 1 है. So we put x is equal to 0 क्योंकि 0 जो है वो -1 to 1 के बीच में आता है कहीं पर भी, तो 0 हमारे लिए इजी रहता है. तो लेट पुट x इक्वल टू 0 इन द रिजल्ट ऑफ फोरियर सीरीज. तो f of 0 is 0 square is equal to 1 upon 3 plus 4 upon pi square sigma n is 1 to infinity minus 1 raised to n upon n square into cos n pi 0. That is your cos 0. And cos 0 is 1. Now simplify that result. तो 1 upon 3 जो है वो राइट हैंड साइड में है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो वो बन जाएगा -1 upon 3 is equal to 4 upon pi square. Cos 0 is 1. So you get sigma minus 1 raised to n upon n square. Now put n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 and so on because it is given in a summation form. तो जब हम 1 पुट करेंगे तो -1 raised to 1 upon 1 square. So -1 upon 1 square. We put n is equal to 2. So -1 raised to 2 upon 2 square. -1 raised to 2 is +1. 1 upon 2 square. Put n is equal to 3. So -1 raised to 3 upon 3 square. But -1 raised to 3 is again 1. -1 raised to 3 is -1. Now 4 upon pi square जो मल्टीप्लाई में है उसको उस तरफ ले जाओ. तो 4 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा एंड पाई स्क्वायर डिवाइड में है वो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. So we get minus pi square upon 12 and take minus common in from bracket. So minus outside 1 over 1 square, then minus 1 over 2 square, plus 1 upon 3 square, minus 1 upon 4 square, and so on. Cancel minus symbol both sides. We get your first result 1 over 1 square minus 1 over 2 square plus 1 over 3 square minus 1 over 4 square and so on is equal to pi square by 12. The first result हमें मिल गया 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus no alternative series, positive negative series. Denominator has a square each number. So your answer is pi square upon 12. Now second things to evaluate that. So our limit is -1 to 1. So let's put x is equal to 1 everywhere. Function is x square. So 1 square is 1 is equal to 1 by 3 plus 4 upon pi square into sigma minus 1 raised to n upon n square into cos n pi. Cos n pi is minus 1 raised to n again. Now simplify करेंगे तो ये 1 upon 3 जो है लेफ्ट साइड राइट साइड पे उसको लेफ्ट साइड ले जाओ तो 1 minus 1 upon 3 4 upon pi square as it is. Cos n pi is minus 1 raised to n itself. So minus 1 raised to n into minus 1 raised to n, we can write down it is similar as minus 1 raised to 2n. फोर अपॉन पाई स्क्वायर इस तरफ है उसको उस तरफ मल्टीप्लाई करके ले जाओ. लेफ्ट हैंड साइड में 1 minus 1 upon 3 है उसको सिंप्लीफाई करो तो वो 2 upon 3 होगा. पाई स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो सिग्मा है उसको एक्सपांड करो बाय टेकिंग n is equal to 1 2 3 4 and so on.
तो सभी में -1 की इवन पावर होगी तो सारे के सारे पॉजिटिव टर्म, and 1/1 square plus 1/2 square plus 1/3 square and so on. Now algebraically these two terms are cancelled. So we get pi square by 6 is equal to 1/1 square plus 1/2 square plus 1/3 square and so on. So that is your second result is obtained. Now first result is 1/1 square minus 1/2 square plus 1/3 square minus 1/4 square and so on, which is equal to pi square by 12. Second result, that is all terms are positive. Now to find out our third result, that is 1/1 square plus 1/3 square plus 1/5 square and so on. That answer is pi square by 8. So just by taking addition of result number 1 and result number 2. So your left hand side, that is addition pi square by 12 and plus pi square by 6. While in right side, that is addition of alternative series and all positive term series. So दोनों का एडिशन करना है तो 1/2 स्क्वायर एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है तो वो कट हो जाएगा, फिर 1/4 स्क्वायर जो भी है वो भी कट हो जाएगा, फिर 1/6 स्क्वायर 1/8 स्क्वायर ऐसे इवन नंबर वाले कटेंगे तो ऑड नंबर वाले बचे रहेंगे. So 1/1 square plus 1/3 square plus 1/5 square and so on, plus again it is repeated 1/1 square plus 1/3 square 1/5 square and same numbers. So there are 2 times that number 1/1 square plus 1/3 square plus 1/5 square. Now addition of our left hand side, that is pi square by 12 plus pi square by 6. So that value is pi square by 4. Pi square by 4. Now to multiply है वो इस तरफ आ जाएगा, तो हमें जो रिजल्ट चाहिए थर्ड वाला रिजल्ट वो यहाँ पर मिल गया. pi square by 8 is equal to 1/1 square plus 1/3 square plus 1/5 square and so on. Hence this example is finished. So if it says that obtain Fourier series and hence deduce the following infinite sum series. So first find out Fourier series, write down its notation, and then put x is equal to 0 or x is equal to 1 or x is equal to 1/2 etc. according to the result it is given. तो जब भी कोई डिड्यूस करना हो तो आप उसको डिड्यूस भी कर सकते हो, एंड सिमिलर notations you can verify that, you can evaluate that example. Okay, so from next lecture we can start that integration from -pi to 0 and then 0 to pi. That is called as a piecewise continuous function. Pi plus x and pi minus x function. That is your piecewise continuous function. So we can evaluate its Fourier series. Now it will limit from -pi to pi and function is given. So you can also check that is it is odd function or not. Because in an odd function, a0 and an both are 0, and in even function bn are 0. वो डायरेक्ट मिल जाता है अगर आपकी लिमिट -pi to pi है तो. बट जब ऐसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो क्या करेंगे? एंड फॉर योर मोर प्रैक्टिस, जो एग्जाम्पल का PDF शेयर किया हुआ है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी नोटबुक में एक बार तो गिनना ही है आपको. एक बार तो आपको उसको कैलकुलेट करना ही है.
आज के लेक्चर्स का पीडीएफ भी मैं कन्वर्ट करके रख दूंगा एंड आगे के लेक्चर्स जो भी है वो लेक्चर जब भी आपको देखना है फॉर रिवीजन, तो यू कैन आइडेंटिफाई